Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 23rd January 2021. So let us see which are the important articles straight away. So these are the articles relevant to our mains examination. These are the articles for prelims examination, and in the end we have also added some prelims pointers. So we will look into that in the end. Okay, so the first article on page number 6, a new framework around caste and census. Okay, so the article here, it is discussing or having the context of, let's say, the new census is going to begin for this decade. 2021 is the census year, we can understand that, and therefore the article is discussing the need of census. At the same time, how socio-economic caste census was carried out in the last decade, and this activity is having some different kind of objective than the normal census. Also, there are some concerns associated with the caste census that the article is discussing and giving some way forward also. Okay, so from social justice and governance perspective in GS2 पेपर as well as demography, ठीक है, जो डेमोग्राफी का जो एस्पेक्ट होता है या सोसाइटी का कास्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट जो होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन आवर GS1 syllabus सोसाइटी पार्ट. So from that aspect we are going to discuss this article. So here in the first two sentences it is giving the need of census or the significance here. Okay. Yes. Enumerating, describing, understanding the population of society and what people have access to and what they are excluded from is important not only from social scientists but also for policy practitioners and the policy practitioners and the government. So basic two important objectives of any, let's say, census is that first is it gives the data for, let's say, policy formulation for the government. Okay, so the government can formulate the policy in appropriate manner when it gets data from the census. So targeted manner में जो है policy formulation होगा और policy implementation होगा. At the same time, the demographic scientist, okay, so demographic geography जो part होता है, तो उसके लिए जो scientist जो होता है या फिर जो हम बोलेंगे experts, for them this data acts as an input for their analysis and they provide some quality inputs for this policy formulation by the government itself. ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इन दिस मैनर वी कैन अंडरस्टैंड दैट द सेंसस ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइजेस ऑफ इट्स काइंड, एन्यूमरेट्स, कलेक्ट्स डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑन द इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, तो हमारे जो सेंसस होता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मे बी सम ऑफ यू हैव एनकाउंटर्ड the people who come to your house and then ask some information for this census part. ठीक है, तो इस साल जो शुरू होने वाला है सेंसस का, तो उससे में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. दे विल आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग योर, लेट्स से, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली एंड लेट्स से कास्ट. At the same time they will ask about the occupation of the family members, education levels, literacy उस पर कैलकुलेट होता है, हम बोल सकते हैं. या फिर बहुत सारी बाकी चीज़ें, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पाइप वाटर सप्लाई, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, एट द सेम टाइम एक्सेस टू अदर सच, लेट्स से, इंटरनेट फैसिलिटीज़, या फिर टीवी है कि नहीं घर पे. ऐसे कुछ जो सर्विसेज होते हैं या गुड्स होते हैं, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ में आएगा लोगों का, राइट. सो फॉर दैट पर्पज द सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. एक्चुअली इट स्टार्टेड एट पैन इंडिया लेवल इन 1887 एंड इट वॉज फर्स्ट, let's say, carried out in 1872 at regional level, small scale हम बोल सकते हैं, but at pan national level during British time period it started in 1881. तो ये आपको एक factual information होना चाहिए. The first pan India level census was carried out in 1881. Okay, so over the time period it has evolved and expanded by the government and it is used for policy formulation. Caste census, with demands to conduct a full-scale caste census gaining traction over the time period, some have seen the inclusion of broader caste information as a necessity to capture contemporary Indian society and to understand and remedy inequalities. Okay, so for that purpose the demand was done. So following the decades of this debate, the socio-economic caste census
was conducted in 2011 and took few years to complete. This was a distinct exercise from the census of 2011. Okay, ये एक बहुत ही यूनिक एक्सरसाइज था. Such kind of exercise was done to kind of let's say figure out caste in the census operation since 1931. तब किया गया था, उसके बाद कास्ट के ऊपर कोई सेंसस नहीं हुआ था, और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसको हम बोलते हैं, तो वो डायरेक्टली अभी 2011 में हुआ है. And this is one of the important input, let's say. But what are the concerns associated with this caste census? Like counting caste may help solidify and harden identities. ठीक है. So basically, when one gets to know that this is the caste, let's say population living in this particular area, this is the density, this is the number of, let's say, SC/ST population, OBC population, then what happens is the political interest or politically motivated interest gain the, let's say, traction in the main discourse or public discourse, and because of that these identities or inequalities in the society may get solidified, may get deepened. Okay, one of the concern. The other concern is whether an institution such as caste can even be captured completely by the census. No, again this is the concern, major concern. We can say only getting the numbers related to caste will not be able to understand the caste dynamic on the ground level. ये एक मेजर कंसर्न है. एट द सेम टाइम द क्वेश्चन रिमेन्स ऑन वेदर द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इज एबल टू कवर द इफेक्ट्स ऑफ कास्ट एज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर in everyday life. This is what we are talking here. The census will not be able to understand what, let's say, particular caste people are facing problems in our society. ठीक है, तो ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है इंडियन सोसाइटी का, that social structure will not be reflected in such exercise. Okay, the next concern here is that the census and SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस have different purposes. क्या डिफरेंट पर्पजेस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो नॉर्मल सेंसस होता है उसमें नॉर्मल डेमोग्राफिक डेटा होता है. However, this socio-economic caste census has some unique questions, get unique information from the family or households, and this socio-economic and caste census has objective of, let's say, policy formulation for the targeted, let's say, implementation, target population implementation. ठीक है, तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है. तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है, द डेटा कलेक्टेड इन SECC is given to the or have access, let's say the government departments and ministries have access to this data, while normal census is carried out under Census Act of 1948, and this all data is considered confidential and it is not having let's say provided access to the government departments. ठीक है, ये डिफरेंस है. बेसिकली SECC इज द टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट सपोर्ट. ठीक है, जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज होते हैं उसके लिए. एट द सेम टाइम द टाइम लैग बिटवीन ईच सेंसस एंड द डिले इन रिलीज ऑफ डेटा इज इन जनरल कंसर्न्स बोथ फॉर नॉर्मल सेंसस एंड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. सो दीज आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद कास्ट सेंसस. देयर कैन बी ए स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग कास्ट सेंसस एंड इट्स एफिकेसी. What is the way forward? Way forward can be linking and syncing aggregated census data to other large data sets such as National Sample Survey or National Family Health Survey. Now this will help to understand the let's say the level of services accessible to the poor people, and at the same time linking poverty with caste is very important aspect. तो ये कैसे समझेगा? इससे समझेगा अगर लिंक करेंगे तो National Sample Survey, National Family Health Survey. For that purpose, this will be, let's say, very good exercise. Care must be taken to ensure that digital alternatives and linking of data sources involving census operations are inclusive and non-discriminatory. ठीक है. So, using of technology, digital technology, should not result into inclusion-exclusion errors. Okay, at the same time there needs to be a closer and continuous engagement between functionaries of the census and socio-economic caste census along with academics and other stakeholders concerned, because academics are those people who are going to, let's say, analyze this data
and further provide some insights, feedback to the policymakers, and therefore there should be coordination between the census functionaries and these academics and other stakeholders such as the common people, ठीक है, और उनके representatives, civil society organizations, CSOs. Okay, so ultimately we can say that concerns about methodology, relevance, rigor, dissemination and transparency, privacy needs to be, let's say, taken seriously while carrying out census. It leads to legitimacy of that census data. Okay, so this is somehow the different kind of article that we have discussed today. Up till now ये topic discuss नहीं हुआ था द हिंदू में. Fine. This year. So GS2 में गवर्नेंस सोशल जस्टिस, GS1 में सोसाइटी. फाइन. नेक्स्ट, फायर वार्निंग. So the article is having context of recent fire accident that happened in the premises of Serum Institute of India in Pune. Now we know that the Pune is called as vaccine capital of the world, or we can say that Serum Institute of India has become the global image of vaccine production, and such kind of incidents, let's say, tarnish the image of company as well as the country, and that there provides the concerns about the fire safety in India. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल जो है पूरा एनालिसिस कर रहा है. Fine. So SII fire incident and need of fire safety. Basically, it is talking about the disaster management, and the disaster management includes the fire accidents that are happening in civilian buildings as well as, let's say, health infrastructure. ठीक है, तो लास्ट ईयर जैसे अहमदाबाद में जो फायर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर जो कोविड-19 में हमने ऐसे कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं फायर एक्सीडेंट के. जैसे रिसेंटली हमने महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे इन्फेंट्स की डेथ हुई थी फायर एक्सीडेंट की वजह से. सो सिमिलर काइंड ऑफ, लेट्स से, इंसिडेंट हैपनिंग इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दैट इज इंपॉर्टेंट कंसर्न. आपको कुछ इंसिडेंट्स पता होने चाहिए आंसर में नोट करने के लिए, राइट? यस. The deadly fire in an upcoming production facility at Serum Institute of India, Pune, has sent shock waves because of key role played by the company in producing Oxford AstraZeneca Covishield vaccine. Initial assessment indicates that Thursday's blaze may have been triggered by flammable materials set afire by sparks generated during construction works. It is welcome that company has offered the solatium for the families of the victim. कंपेंसेशन दिया गया है, who included migrants from Uttar Pradesh and Bihar. But the bigger task is to convince the world that critical vaccine supplies are not jeopardized by lax safety protocols. Okay, this is the major aspect. Now we can say that we need to now convince to the world that it is safe. ठीक है, the safety, fire safety is in place. तो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं, ये कन्विंस करना पड़ेगा अभी. द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स विच आर टाइम एंड टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. वैक्सीन जो होते हैं वो टाइम सेंसिटिव भी होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनका इफिकेसी कम हो जाता है. एट द सेम टाइम दे नीड टू बी स्टोर्ड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. दैट्स व्हाई दे आर टेम्परेचर एंड टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, require special care, and COVID-19 has come as a wake-up call to the governments to overcome supply bottlenecks and capacity constraints. For that purpose, we can understand that pharmaceutical production must satisfy precision, quality and safety standards comparable to high technology sectors such as defense and space. Such kind of quality should be there when we talk about the fire safety. Higher standards of fire safety form core of all manufacturing. Okay, so be it the pharmaceutical manufacturing or other such sectors, it is the core of all manufacturing sectors. ठीक है, जो सारे इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें. Too often safety during the construction and operation suffers dilution due to cost considerations with almost no fire awareness among the workers. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस when I was working in one of the MNC, and there was let's say refinery construction was going on, and I was working at site, and I can see the kind of, let's say, safety standards were being implemented. Though we can understand there was safety department was there,
and there were regular inspections, but in general awareness among the labor or workers was very poor. The safety instruments were not updated, or let's say not given to the workers. At the same time, the safety, especially the fire safety, is very poor in let's say on the such sites. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स और ऑपरेशन साइट्स पे ये सेफ्टी अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, मॉक ड्रिल्स होना, या फिर उनके लिए एक लेट्स से वर्कशॉप अरेंज करना सेफ्टी डिपार्टमेंट के थ्रू, ये कंटिन्यूसली होना चाहिए. फाइन. सो द पुणे फायर शोज दैट लाइव्स एंड रेपुटेशंस डिपेंड्स ऑन फुल अडेरेंस टू गुड प्रैक्टिस. ठीक है, तो लाइफ भी है, इमेज भी है, और इकोनॉमी यानी कि प्रॉफिट भी है. ऑल डिपेंड्स ऑन let's say good practices in terms of safety standards, ensuring safety standards. Fine. So for disaster management purpose या COVID-19 से related कुछ incidents हुए हैं, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए. Fine. Next, for prelims purpose, India proposes to expand research and tourism in the Arctic. Now the new draft policy, Arctic policy, new draft Arctic policy has been released by the government for public opinion. So this policy seeks to, let's say, or commits to expanding scientific research, sustainable tourism and mineral oil and gas exploration in Arctic region. Now you need to know that we have Antarctic Treaty, or we can say that peaceful use of, let's say, Antarctic continent. ठीक है, तो वहां पे किसी भी तरीके का एक्सप्लोरेशन वगैरह अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी. बट आर्कटिक डज नॉट हैव सच काइंड ऑफ ट्रीटी. देयर इज आर्कटिक काउंसिल फॉर द आर्कटिक सराउंडिंग स्टेट्स और लिटोरल स्टेट्स, and these states makes generally the decisions about the Arctic Ocean or Arctic region, that region. So it is not having any kind of treaty, we can understand. India expects the Goa-based National Center for Polar and Ocean Research to lead the scientific research. So now this is declared as nodal agency under this policy document. Already this institute is the nodal agency for research activities in Antarctic continent. ठीक है, या Antarctic region जो है. ठीक है, so Arctic research will help India's scientific community to study melting rates of the third pole, that is Himalayan glaciers. Okay, at the same time, we can understand that the kind of climate change phenomenon that is happening, that will, to understand that phenomenon, again, the scientific research will help in that. Okay, so additional information, India launched its first scientific expedition to Arctic Ocean in 2007 and opened a research base named Himadri at, let's say, International Arctic Research Base in Svalbard, Norway in 2008. तो हिमाद्री जो है आर्कटिक के रिसर्च के लिए वहाँ पे लोकेटेड है आर्कटिक रीजन में. ठीक है, सो सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च. तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए. इंफॉर्मेशन, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है R&D के लिए. एस्टेब्लिश्ड इन 1998, located in Goa. It maintains India's permanent stations in Antarctic, that is Maitri and Bharti. Two stations are there, Maitri and Bharti, and research base in Arctic, Himadri. ये आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बेसिक लेवल के इंफॉर्मेशन है रिसर्च के रिलेटेड. फाइन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. So you can attempt this prelims, practice prelims question, and you can give the answer in comment box in this video. Okay, so in this way we can have the interaction. two-way interaction की बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे आपको prelims examination का preparation start करना पड़ेगा. अभी prelims is becoming more and more dynamic, and we can say that that dynamicness has the basis of current affairs. ये द हिंदू एनालिसिस से आप input लेते रहिए. Next, some prelims pointers. Now these prelims pointers should be used to eliminate your options in your examination, gain the information, apply this information in your examination. So what is given in some of the articles in today's The Hindu newspaper, that is themes at Republic Day parade. So ये जो 26 जनवरी तक बहुत सारे अभी themes न्यूज़पेपर में आते रहेंगे अलग अलग स्टेट्स के, तो आपको ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए. इंडियन नेवी in on its tableau
we can understand that it is going to celebrate the 50 years of India-Pakistan war and its contribution in this war. ठीक है, तो जो operations carry out किए गए थे Indian Navy के द्वारा. So at the same time it coincides the golden jubilee celebrations of liberation war of Bangladesh 1971. So it is going to be let's say Bangladesh is observing Swarnim Vijay Varsh this year, and for that purpose a tri-service contingent of Bangladesh Armed Forces is taking part in the parade on Rajpath this year. ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. गोल्डन जुबली. Uttar Pradesh W in this year's Republic Day parade will showcase Ayodhya's cultural heritage and the temple proposed model of Ram temple that is being built in the ancient city. ठीक है, तो अयोध्या का जो है कल्चरल हेरिटेज का थीम है. यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इज स्टेबल. तो वहाँ पे जो अभी रिसेंट लेबर रिफॉर्म्स लाए थे, 4 लेबर कोड्स दैट हैव अमालगमेटेड 29 सेंट्रल लेबर लॉज. Now these are going to be let's say shown on the tableau of Ministry of Labor and Employment. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इसमें हम अगले कई दिनों में अपडेट करते रहेंगे कि बाकी स्टेट्स के क्या थीम्स है. नेक्स्ट इज इन वन आर्टिकल और फर्स्ट पेज, सम ऑफ द आर्टिस्ट इन लिविंग इन दिल्ली, eminent artists will say that they have been asked to evacuate their homes by the government. तो उसके लिए एक इंफॉर्मेशन का एक आर्टिकल आया था उससे रिलेटेड. सो मोहिनी अत्तम, ये जो आपको क्लासिकल डांस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. एंड विच आर द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया. मोहिनी अत्तम इज फ्रॉम केरला, कथकली फ्रॉम केरला, कथक इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, सत्रिया डांस फ्रॉम आसाम, भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु एंड मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर. ओके, फॉर नॉर्थ ईस्ट से 2 है जो है सत्रिया आसाम और मणिपुरी जो है मणिपुर से. ईस्टर्न रीजन से हम बोल सकते हैं ओडिशा है, ओडिसी जो है ओडिशा से. नॉर्दर्न रीजन से एक ही है क्लासिकल डांस में, कथक जो है वो. और साउदर्न इंडिया से बहुत सारे हैं जिसमें हम मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम की बात करते हैं. सो मोहिनीअट्टम, इट इज वन ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म डेवलप्ड एंड रिमेन इन द स्टेट ऑफ केरला. ट्रेडिशनली ए सोलो डांस परफॉर्म बाय द women. At the same time, it includes music of Carnatic style. Okay, so basically the Devdasis in temples, they used to perform this dance in the, let's say, ancient time period. From the Sangam period we can say that, जो उस टाइम का है. And let's say over the period of time, especially during the British time period, this was, let's say, the dance form did not get any kind of, let's say, patronage. Okay, earlier the kings used to give the patronage, but पिछले कई सालों से जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड में इसको दबाया गया था. इट यूज्ड टू बी, लेट्स से, द डांस फॉर्म वाज नॉट कंसिडर्ड एज गुड फॉर्म, वी कैन से दैट. हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस सम ऑफ द पीपल at the same time formed their institutes, organizations and promoted this dance form later on. Okay, so you need to know about them. ये जो पोजीशन होता है डांस फॉर्म का उनका जो फेमस है वो यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा है. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्लासिकल डांस फॉर्म्स व्हेनेवर दे आर इन न्यूज. ये था पहला मोहिनीअट्टम. Okay, so yes, these were important articles from today's The Hindu newspaper. For further information on editorial discussion classes or ED classes, wherein in-depth analysis of all mains related issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. At the same time, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये वीडियो के लिंक्स डेली मिलते रहे. फाइन, थैंक यू.